Namaskar and a very good morning. Welcome to the audiocast from Kotak Securities. I'm your host and guide, Anindya Banerjee. As Asian equity markets are trading in the green, largely in the green, our dollar index is on the back foot. Just a combination means that it's good news for the Indian rupee. But surprisingly, offshore mein, Indian rupee is trading, or USDINR is trading around 83.26 on the spot reference. जिस हिसाब से एशियन करेंसीज are appreciating and other currencies are appreciating against the dollar, it looks like आज USDINR में हो सकता है एक selling pressure बना रहे क्योंकि 83.30, 83.35 has been upper cap. एक बार briefly 83.47 तक गया था, but due to technical reasons which we had highlighted, so largely we can say 32.35 is the upper cap. अगर उसको ब्रीच किया इस बार देन इट कुड बी सिग्निफिकेंट 83 हाफ के लिए ओपनिंग बन सकता है, बट एज ऑफ नाउ 30-35 इज द अपर कैप ऑन स्पॉट लेवल्स और 83 से 83.10 इज द लोअर बाउंड. दिस इज यूएसडी तो हो सकता है आज एक बार ड्रिफ्ट डाउन करे. सो इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सेल एट अ हाई लेवल यू कैन डू इट, बट रिमेंबर टू मेंटेन अ स्टॉप अबव 83-35 levels. Otherwise, it's a range-bound thing. So, short strangle can continue to be done. People can look at selling month-end options क्योंकि क्या है कि because of record low implied volatilities, जो weekly में premium offtake है, that is very low. So, if you are willing to take risk, then you can look at month-end like November end or maybe out to December. But keep one thing in mind, very, very important. जितना time to expiry ज़्यादा होगा, वहां पे द लार्जली द प्ले इज ऑन इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी, क्योंकि इट मीन्स दैट उसका जो वेगा होता है और सेंसिटिविटी ऑफ द ऑप्शन प्राइस टू द चेंज इन इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी सिग्निफिकेंटली हायर. मतलब अगर लेट्स से 1.8 का इम्प्लाइड वॉल बिकम्स 2.8 और 3, तो जो इम्पैक्ट आएगा वीकली स्ट्रैडल में ऑप्शन प्राइस में उससे फार मोर इम्पैक्ट आएगा ऑन अ मंथ एंड, लेट्स से नवंबर एंड और स्पेशली अ डिसंबर एंड, बिकॉज वो उसमें काफी टाइम टू एक्सपायरी है. सो कीप दैट इन माइंड व्हेन यू आर रीचिंग आउट टू डू सच ट्रेड्स, that these are the risks in the market. Or secondly, of course, if the range breaks, so of course you have to take a evasive action, either exit with a stop loss or take a hedge on the direction. But even if the prices stay within a range, if the implied volatility rises, your straddle price will rise as well. Keep that in mind, especially for longer dated options. Otherwise, the overall price structure is a range, as I said, buying near 83.10 with a stop below 83 and selling near 83.35 with a stop above that can be done. So this is largely the game. In case अगर 83.35 के ऊपर sustain हो रहा है तो हो सकता है it can extend towards 83 half, but as of now 83.30-35 is the upper cap. क्रॉस करेंसीज में जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स में सेल ऑफ है तो उसमें यूरो आईएनआर इज डूइंग एक्सीडिंगली वेल, क्योंकि अगर हम लोग फंड्स का पोजीशनिंग देखें इन द ग्लोबल मार्केट्स, दे आर फेवरिंग यूरो ओवर जीबीपी, बिकॉज जीबीपी में हाल ही में द डेटा हैज बीन प्रीटी बैड and that is the reason why it has been bad from eurozone as well, but relatively GBP का data has been a little more bad. So इसके लिए the funds have gone long on the euro and largely holding shorts on the pound. But this is also an opportunity, क्योंकि अगर the short covering starts, because we are in the final month, almost approaching the final month of the year, जहाँ पे books are squared off, the positions get squared off, the books gets closed. So at such times हो सकता है एक short covering आ जाए. तो GBP INR will be a currency I'll be keeping a watch on. उसका option market is also very liquid, so on the NSE. So GBP INR can be instrument to keep an eye on. Short covering में क्या होता है, the moves can be quite explosive. So the price action suggests it's still a bullish price action. So we'll be looking for buy on dips in Euro INR and JPY INR. JPY INR is looking quite interesting क्योंकि इसमें भी heavy short position है because of the carry trade. And जब carry trade unwind होता है उसका moves are very explosive on the upside. So इसके लिए जिस हिसाब से US 10-year bond deals have come down, डॉलर येन के लिए बहुत बड़ा एक नेगेटिव फैक्टर है. अगर डॉलर येन में और सेल ऑफ आता है तो येन आईएनआर कैन राइज सब्सटेंशियली. सो कीप दैट इन माइंड. सो येन आईएनआर कैन बी अनदर करेंसी टू कीप एन आई ऑन. जब यूएसडी आईएनआर में मूवमेंट नहीं है तो क्रॉस करेंसीज में काफी अपॉर्चुनिटीज है
it is makes sense to keep an eye on these currencies both through futures as well as options. और options का बात करें तो GBP का options are far more liquid than Euro INR or JPY but futures are liquid for all three, Euro, GBP and Yen. और तीनों में there is a lot of action. और ये हफ्ता we have a lot of economic data from Europe and US. Flash PMIs are there, IFO numbers are there, monetary policy report hearings from UK is there, ECB फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो रिव्यू होता है वो भी है. सो काफी सारे ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स होते हैं. सो देयर इज लॉट ऑफ डेटा, FOMC minutes are there that the market can trade in, and we are also seeing a lot of volume pick up in the cross currencies क्योंकि USDINR में ज्यादा मूवमेंट तो है नहीं इसके लिए. So that's it folks, this is Anindya Banerjee signing off. A fantastic day ahead.